Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture number 1. I am your English teacher. Your book is GABA Primary English. Open your book. Chapter number 1, page number 1. Daydreaming Girl. Now, I'm going to read this chapter. Please listen carefully and try to repeat with me. Muna, daughter of a farmer, was a cute girl. She admired herself when she looked in the mirror every day and always thought, "One day a prince will come and marry me, and I shall never go with a farmer's son." But she did not have a silky gown to match with her beauty. Muna's day began very early in the morning. Every day she had to milk the cow and take the milk to the market. But she was slow in her work due to her daydreaming. Her mother always scolded her. "What are you always dreaming of, baby? Work quickly or you will be late for the market." Muna used to hear her mother but did not obey. One day Muna was dreaming about her prince while sweeping when her father noticed her dreaming and scolded her. "No prince from a castle will come for you, baby. Just do your house chores. Soon I'll marry you with my son's father's friend's son." Now, students, please note down the difficult words, read them, and understand their meaning. Admired, sarhana. Scolded, गुस्सा करना. Dreaming, ख्वाब देखना. Quickly, जल्दी से. Sweeping, झाड़ू लगाना. Now, students, I am going to explain you this story in Urdu. Please listen carefully. Muna एक किसान की बेटी थी जो बहुत प्यारी थी. वो अपने आप को सराहती थी. जब भी वो ख़ुद को आईने में देखती थी और यही बात सोचती थी कि एक न एक दिन कोई शहज़ादा आएगा और उससे उसकी शादी हो जाएगी. उसे किसी किसान के बेटे से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पास उसकी खूबसूरती से मैच करने के लिए कोई सिल्की गाउन नहीं था. मूना रोज़ सुबह सवेरे जल्दी उठ जाया करती थी. हर रोज़ वो गाय का दूध निकालती और बेचने के लिए मार्केट जाती थी, लेकिन वो अपना हर काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता करती थी. उसकी वालदा उसे हमेशा समझाती थी और नाराज़ होती थी और कहती थी कि तुम क्यों ख्वाब देखती रहती हो, जल्दी जल्दी अपना काम किया करो ताकि तुम मार्केट टाइम पे पहुंच सको. लेकिन मूना अपनी वालदा की बातों को सुनती तो थी लेकिन मानती नहीं थी. एक दिन मूना झाड़ू लगाते हुए अपने उसी शहज़ादे के बारे में ख्वाब देख रही थी तो उसके वालिद ने नोटिस किया और वो नाराज़गी से बोले कि तुम अपने ख्वाबों में गुम रहती हो. उन्होंने कहा कि कोई शहज़ादा अपने किले से नहीं आएगा तुम्हारे लिए. तुम अपने घर का काम दिल लगा के किया करो और मैं जल्द ही तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दूंगा. "Moo," said the cow, as she too called out to Muna. The girl tossed her lovely head, picked up the pail, and marched angrily to the cowshed. As Muna milked the cow and the thick creamy white milk splashed about in the pail, she noticed its quantity. "Our cow has given more milk today,"
I'll get a good price. After she finished milking, she, as per her daily practice, set the pail on her head and started walking towards the market. On the way, she continued daydreaming. I'll buy 300 eggs. With this money, I'm going to start a new business from today. Father, Father will not refuse, as he also wants more money, doesn't he? She continued in her thoughts. I'll put these eggs to hatch, even if some of them break or rot, at least 250 chicks will hatch. For a moment she thought of the creamy milk which slashed about in the milk pail on her head. She saw a big stone lying in the middle of the way. She walked around it. I'll feed chicks well so that they grow into fat hens. These fat hens will sell at a high price, she thought. Muna was excited now. The flow of her dreamy thoughts Muna was excited now. The flow of her dreamy thoughts sped up. I shall take my share of money and buy a gown for myself. Silky white gown, dazzling with pearl button and bright blue ribbons to match with my blue eyes. I'll buy long white gloves and tiny slippers. Muna's feet on road were a little trembly as she was riding her dreams. I'll be invited everywhere in my beautiful dress. I'll go to all parties. Other girls will be quite jealous of me for my silky shining dress. And the boys? All the boys will long for a dance with me. Now Muna was quite excited. She forgot that she was carrying a milk pail on her head. She was completely lost in fantasies. The boys will go down on their knees. Each of them will plead me to marry him. I'll refuse them. A farmer's son? No, no. I will marry only a prince. I will turn up my nose and toss my head at any other. At this moment, Mona gave a toss to her head. Her pail tilted and milk flew down on her clothes. As she felt wetness, she came to her senses. Muna tried to grab the pail, but it was too late. The pail fell on the ground, and her dreams were lying on earth with the milk. गाय भी मो करके हाँ कहती है फादर की बात पे। मोना अपना सर हिलाते हुए दूध की बाल्टी को उठाए और गुस्सा करती हुई वहाँ से चली जाती है। जैसा कि मोना देखती है दूध बहुत अच्छे मकदार में और गाढ़ा है, रोज़ाना के लिहाज से दूध की मकदार ज़्यादा है, तो वो बोलती है कि आज इसके एवज़ अच्छे पैसे मिल जाएंगे और वो ये सोचकर दूध की बाल्टी सर पर रखती है और मार्केट की जानिब जाने लगती है। रास्ते में चलते हुए वो फिर से ख्वाब देखने लगती है और सोचती है कि दूध को बेचकर जो पैसे आएंगे, इन पैसों से मैं 300 अंडे ख़रीद लूँगी और नया काम शुरू करूँगी मुर्गियों का। पापा वो मना नहीं करेंगे, उनको तो पैसे चाहिए। उनको जब पता चलेगा कि इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। और वो फिर से सोचने लगती है कि इन अंडों से चूज़े निकलेंगे। अगर 50 अंडे ख़राब भी हो गए तो 250 अंडे यानी 250 चूज़े तो निकलेंगे ही। वो एक मिनट रुककर सर पर रखे हुए बाल्टी के बारे में सोचती है और सड़क के दरमियान एक पत्थर पड़ा होता है जिससे बच जाती है और आगे बढ़ती है। उसकी ये ख्वाब दोबारा शुरू हो जाते हैं। वो सोचती है कि जो चूज़े निकलेंगे मैं उनको खूब अच्छी तरह खिलाऊं पिलाऊंगी और वो बहुत अच्छे सेहतमंद मुर्गियां बन जाएंगे। इन मुर्गियों के क्योंकि वो सेहतमंद होंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। मोना ये बात सोचकर बहुत खुश हो जाती है
اور اپنے خوابوں میں گم رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ جو اچھے پیسے ملیں گے اس سے میں ایک سلک کی گاؤن خریدوں گی جو بہت خوبصورت ہوگا، چمکتا ہوا ہوگا، اس میں موتی لگے ہوں گے جو میری آنکھوں کے ساتھ کلر کے ساتھ میچ کریں گے۔ اس کے ساتھ میں وائٹ گلوز بھی خریدوں گی اور سلیپرز بھی خریدوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے مونا تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ ڈریس پہن کر میں تمام پارٹیز میں جاؤں گی اور لوگ مجھے دیکھ کر جیلس ہوں گے، خاص طور پہ لڑکیاں، اور لڑکے بھی مجھے دیکھ کر میرے ساتھ ڈانس کرنے کی خواہش کریں گے۔ یہ بات سوچ کر مونا اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ جب یہ لڑکے میرے ساتھ ڈانس کے لیے خواہش کریں گے تو میں انہیں منع کر دوں گی اور غرور سے سر ایک طرف کروں گی۔ سارے لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن میں تو کسی کسان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، میں تو پرنس سے شادی کروں گی۔ اور یہ سوچ کر وہ مغروریت سے ایک طرف اپنا سر ہلاتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس کے سر پہ ایک ملک کی بالٹی رکھی ہوئی ہے جو اس کے سر ہلانے کی وجہ سے ہلتی ہے اور اس میں سے کچھ دودھ اس کے کپڑوں پہ گرتا ہے، جس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں تھی اور وہ جاگ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دودھ کی بالٹی کو پکڑتے پکڑتے وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کے خوابوں کی طرح ملک بھی زمین پہ گر جاتا ہے۔ بچوں، اس کہانی کا جو مورل ہے وہ یہ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف خواب دیکھنے سے خواب پورے نہیں ہو جاتے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور ایسے خواب دیکھنے چاہیے جو حقیقت پہ مبنی ہوں، جنہیں آپ پورا کر سکیں اپنی محنت کے ساتھ۔